हेलो दोस्तों। आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इंट्रोडक्शन। अ कॉन्ट्रैक्ट, a contract is an agreement enforceable at law. A contract is an agreement enforceable at law. कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, एनफोर्स करता है किसको? लॉ को। मेड between two or more person by using rights are required by one or more to act or forbiddance on the part of the another or other. A contract is an agreement create and define obligation between the parties. कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है? कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट क्रिएट करता है। डिफाइन ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज, किन किन के बीच में? पार्टीज के बीच में। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम? 1872 का। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 lays down general principles related to formation and enforceability of contract rules governing the provision of an agreement and offer. The various types of contract include those of indemnity and guarantee, biletment and pledge and agency. It also contains provision pertaining to breach of contract. The law of contract constitutes the most important branch of mercantile and commercial law. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच कौन सा है? इसके दो इम्पोर्टेंट ब्रांच है, एक है मर्केंटाइल और दूसरा है कमर्शियल लॉ। इट अफेक्ट एवरीबडी, more so trade, commerce, and industry. It may be said that the contract is an foundation of the civilization, the foundation of the civilized world. The Indian Contract Act 1872 came into force on 1st day of September 1872। क्या बोला गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब आया गया फोर्स में? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। The preamble to the act, the preamble, the preamble to the act, the preamble to the act said that it is an act to define and amend certain part of the law related to contract. The preamble to the act said that is an act to define and amend certain part of the law related to contract. The act is by no means exhaustive on the law of contract. It does not deal with all the branches of the law of contract. Exhaustive on the law of contract. It does not deal with all branches of the law of contract. Thus, contract related to partnership. कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू पार्टनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट किसके रिलेशन में है? पार्टनरशिप। सेल्स ऑफ गुड्स,
negotiable instrument, insurance, etc., are dealt with by separate act. The Indian Contract Act majorly deal with the general principles and rules governing contract. The act is divisible into two parts. The act is divisible into two parts. एक्ट को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में. The first part, section first to 75, deal with the general principle of the law of contract and therefore apply to all contract irrespective of their nature. सेकंड पार्ट में बोला गया है सेक्शन 124 टू 238 deal with certain special kind of contract, namely contract of indemnity, guarantee, billetment, pledge, and agency. Contract. The Indian Contract Act has defined contract in section 2H. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो डिफाइन किया गया है वो कहाँ किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज H as an agreement enforceable by law. As an agreement enforceable by law. This definition indicates that a contract essentially consists of two distinct parts. First, there must be an agreement. Second, such an agreement must be enforceable by law. क्या बोला गया है एनफोर्सेबल बाय एनफोर्स करते आना चाहिए इसको लॉ को indicate contract essential consists of two distinct part distinct part दो पार्ट दो पार्ट कौन से इसके फर्स्ट पार्ट कौन सा है देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट दोनों पार्टी होना चाहिए उन पार्टी के बीच में पार्टियों के बीच में क्या होना चाहिए अग्रीमेंट होना चाहिए और अग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ एनफोर्स करते आना चाहिए एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए लॉ को एनफोर्स करते आना चाहिए टू बी एन To be enforceable, an agreement must be coupled with an obligation. A contract there is a combination of two elements, agreement and obligation. Agreement. An agreement give birth to contract. Agreement क्या है? Contract को जन्म देता है. Agreement क्या है? Contract को जन्म देता है. As per section 2 clause E of the Indian Contract Act, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. Agreement मतलब होता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन डिक्लेयर हो. It is evident from the definition given about that an agreement is based on a promise. What is a promise? According to section 2 clause B of the Indian Contract Act, when the person to whom the proposal is made signifies his asset
thereof, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. An agreement therefore comes into existence when parties make a proposal or offer to the party and other party signify assert there. In a nutshell, an agreement is the sum total offer and acceptance. अग्रीमेंट मतलब इसका मतलब ये है कि एक पर्सन ऑफरर होगा और एक पर्सन ऑफरी होगा। एक पर्सन ऑफर करेगा कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट कि कि हम ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और फिर वो एक दूसरा पर्सन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। एक पर्सन ऑफर देगा और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ बा हम इसमें अब अग्रीमेंट में जुड़ेंगे। अग्रीमेंट अग्रीमेंट में बोला गया है प्लूरलिटी ऑफ पर्सन प्लूरलिटी ऑफ पर्सन देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन टू मेक एन अग्रीमेंट। दो और दो से ज्यादा भी लोग अग्रीमेंट बना सकते हैं बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद हिमसेल्फ क्योंकि अकेला पर्सन अग्रीमेंट नहीं बना सकता। कंसिनस एड एडम कंसिनस एड एडम The meeting of the mind is called the meeting of the minds is called consciousness and Adam. It means both the parties to an agreement must agree about the subject matter of the agreement in the same sense and at the same time. अग्रीमेंट में क्या होगा, अग्रीमेंट किस टाइप का होगा, कैसे बनाएंगे, अग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एम्स क्या होंगे, इसको डिस्कस किया जाता है कॉन्सन कॉन्सेंसस एड एडम में। ऑब्लिगेशन के obligation is the legal duty to do or abstain from doing what one has promised to do or abstain from doing। ऑब्लिगेशन कैसी ड्यूटी है, एक लीगल ड्यूटी है। ऑब्लिगेशन एक लीगल ड्यूटी है। एक पर्सन जो होता है वो एक प्रॉमिस करता है कि तुम दूसरा पर्सन कि उसको फॉलो करता है उसकी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। A contractual obligation arises from a bargain. A contractual obligation arises from a bargain between the party to the agreement who are called promisor and promisee. Section 2, Clause B said that when the person to whom the proposal is made signify his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and proposal when accepted become promising in broad sense. Therefore, a contract is an exchange of promise by two or more persons, resulting in an obligation to do or abstain from doing a particular act where such obligation is recognized and enforced by law.
and and enforced by law. इसमें दो पर्सन होता है, एक प्रोमिसर और दूसरा प्रोमिसी। जो प्रॉमिस जो ऑफर देता है उसे प्रॉमिसर बोला जाता है, जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे प्रॉमिसी बोला जाता है। सीधा सीधा देखा जाता है, जो प्रॉमिस देता है उसे प्रॉमिसर बोला जाता है, जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है उसे प्रॉमिसी बोला जाता है। राइट एंड ऑब्लिगेशन। राइट राइट एंड ऑब्लिगेशन। राइट एंड ऑब्लिगेशन। Right and obligation. When have made a binding contract. When parties have made binding contract, ऐसा contract बना दिए binding contract. They have created right and obligation between themselves. The contractual right and obligation are correlated. They have created right and obligation between themselves. The contractual right and obligation are correlative. Contractual right कैसा है? Correlative है। And agreed with B to sell his car for rupees 10 lakh to him. In this example, the following right and obligation have been created. इसमें क्या create हो गया है? Right and obligation. A is under an obligation to deliver the car to B. The obligation में आएगा कि उसको क्या क्या करना है, कार को डिलीवर करना है किसको, बी को। बी हैज करस्पॉन्डिंग राइट रिसीव द कार। बी का क्या राइट है, उसका राइट है वो कार को रिसीव करेगा। B is under an obligation to pay rupees 10 lakh to A. A का राइट क्या है, A has correlative right to receive rupees 10 lakh. Agreement which are not contract. Agreement which are not contract. कुछ कुछ अग्रीमेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। Agreement in which the idea of bargain is absent. Agreement in which the idea of bargain is absent and there is no intention to create legal relation are not contract. Agreement related to social matters. Agreement किसके related हो, अगर social matters के related हो। An agreement between two persons go to the cinema. दो पर्सन है सिनेमा देख के तरफ गए देखने। Or for a walk does not create a legal obligation on their part to abide by it. Similarly, if I promise to take you for dinner and break that promise, I do not accept to be liable to legal penalty. There cannot be any of an acceptance to hospitality. कोई पर्सन है, एक पर्सन है जिसने ऑफर दिया तू मेरे घर खाना खाने आना डिनर करने, पर दूसरा पर्सन आया ही, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जेल में डाल देगा। डोमेस्टिक अरेंजमेंट between husband and wife. In
Balfour versus Balfour 1990. A husband working in Ceylon had agreed in writing to pay a housekeeping allowances to his wife living in England. On receiving information that she was unfaithful to him, he stopped the allowances. He was held to be entitled to do so. This was mere domestic arrangement with no intention to create legal binding relation. Therefore, there was no contract. एक हस्बैंड है जो दूसरे देश में रहता है और वाइफ जो है दूसरे देश में रहती है। हस्बैंड ने रिटर्न में लिख कर दिया बोलते कि मैं तुमको हाउस अलाउंसेस दूंगा, हाउसकीपिंग का जो भी अलाउंसेस है तुम्हारे, उसको मैं हर महीने दूंगा तुमको। पर कुछ रीजन की वजह से हस्बैंड ने वाइफ को अलाउंसेस भेजना बंद कर दिया। इसका पर और उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ जाके जेल में डाल दे अपने पति को। इसलिए ये कोई ऐसा लीगल एग्रीमेंट नहीं है। Three consequences follow from above discussion. Three. Three consequences follow from the above discussion. To constitute a contract, the party must be intent to create legal relationship. लीगल रिलेशनशिप इंटेंशन कैसा होना चाहिए, उनका लीगल रिलेशन होना चाहिए। The law of contract is the law of those agreements which create obligation and those obligations have their source in agreement. The law of contract, the law, the law of contract, the law of contract is the law of those agreements which create obligations and those obligations have their source in agreement. लॉ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर those agreement which are create obligation create होना चाहिए। agreement is the genius of which contract is the special and therefore all contract are agreement but all agreement are not contract। यहाँ बोला गया है agreement is the genius और contract is a special, therefore all contract are agreement। हर contract क्या हो सकता है, हर contract agreement हो सकता है, पर all agreement contract नहीं हो सकते। Essential element of a valid contract, essential essential element of valid contract। क्या क्या एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, क्या क्या एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, वो बताए जा रहे बताए जा रहे हैं।
Section 10. Section Section 10 of the Indian Contract Act 1872. Section 10 of the Indian Contract Act 1872 provide that all agreement or contract all all agreement or contract सेक्शन 10 के अंदर जो भी एग्रीमेंट दिए गए हैं वो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट है agreement or contract if they are made by the free consent of the parties. Complete contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not there be expressed declare to be void. Essential element देखेंगे contract के an offer and an offer or proposal by an one party and acceptance of that offer by another party result in an agreement consensus ad idem एक पार्टी कौन सी होनी चाहिए क्या बोल रहा है पहले पॉइंट में एक पार्टी जो है वो ऑफर को ऑफर एक जो पार्टी है एक एक जो पार्टी है दूसरे पार्टी को ऑफर देंगी ठीक है और दूसरी पार्टी जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी दूसरा पॉइंट क्या बोलता है एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन और एन इंटेंशन टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए एक ऐसा रिलेशन लीगल रिलेशन एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तीसरा पॉइंट क्या बोलता है एन अग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन उस अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न क्या होता है उसका मतलब समथिंग समथिंग इन रिटर्न समथिंग इन रिटर्न समथिंग इन रिटर्न नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द पार्टी टू बी टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग जो पर्सन है वो जो पार्टी है वो कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के अंदर कोई भी ऐसा जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायबल नहीं हो अगर उस पर्सन को हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो वो कैसा हो जाएगा वाइड हो जाएगा फिफ्थ देखिए जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टी जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए किसके बीच में पार्टियों के बीच में पार्टियों के बीच में जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए The object and consideration of the contract is legal and is not opposed to public policy. The object and consideration कैसा होना चाहिए लीगल होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए अपोज्ड नहीं करना चाहिए The term of the contract are certain terms होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर The agreement is capable of being performed. The agreement is capable of being performed. It is not impossible of being performed. Therefore, to form a valid contract, there must be. Therefore, to form a valid contract, there must be. Therefore, to valid contract, there must be. An agreement
based on genuine consent of the parties supported by lawful consideration. Mode for a lawful object made for a lawful object between the competent competent parties. Offer or proposal and acceptance. Offer, proposal and acceptance. Offer, proposal and acceptance. One of the early steps in the formation of contract lie in arriving at an agreement between the contracting party by means of an offer and acceptance. One of the early steps in the formation of a contract lie in arriving at agreement between the contracting party by means of an offer and acceptance. Thus, when one make define proposal to another party and the offeree accept entire without any qualification, there is meeting of the mind of the party and contract come into being, assuming that all other elements are also present. पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि पहले एक मीटिंग और डिसाइड होता है कि हाँ हम आपस में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपस में क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे माइंड में आता है। फिर टू पर्सन मिलते हैं। फिर वन पर्सन क्या करता है कि ऑफर देता है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी बात है, तो आप ऑफर लेना चाहेंगे क्या? फिर दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। उस पर्सन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तब कहीं जाके उसका अग्रीमेंट तैयार होता है। A proposal is also term of an offer. A proposal is also term as an offer. वो प्रपोजल रख रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रपोजल रख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑफर. The word proposal is a synonymous with the English word offer. The word proposal किसका synonyms है, English word offer. Offer is a proposal by one person. An offer is a proposal by one person where he expresses his willingness to enter into contractual obligation in return for a promise, act, or forbearance. Section 2, Clause A of the Indian Contract Act define proposal or offer as when one person signifies to another his willingness to do abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal. The person making the proposal or offer is called proposer or offerer, and this person to whom proposal is made called offeree. Rules governing offerers. Rules governing offerers. A valid offer must comply with the following rules. कुछ rules दिए गए हैं ऑफर के लिए.
कि ऐसा ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एन ऑफर मस्ट बी क्लियर, डिफाइन, कंप्लीट एंड फाइनल। जो भी ऑफर आप अनदर पर्सन को दे रहे हैं तो वह कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और कंप्लीट एंड फाइनल होना चाहिए। और पूरा होना चाहिए ऑफर, उसमें पूरी डिटेल्ड होनी चाहिए और फाइनल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी वेग्यू, कैसा नहीं होना चाहिए, वेग्यू नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a promise to pay and increase the price for a horse. A promise to pay and increase the price for a horse if it provide luck to promiser is too vague and it is not binding. पर्सन है जो घोड़ा बेचना चाहता था, पहले 10 बोल रहा था, बाद में क्या बोले 15 में बेचूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। An offer must be communicated to the offeree. ऑफर को कम्युनिकेट, बोलचाल होना चाहिए, ऑफरी को भाषा में भी बताना चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए अग्रीमेंट के बारे में ऑफरर और ऑफरी के बीच। एन ऑफर बिकम इफेक्टिव एंड ऑफर become effective only when it has been communicated to the offeree as such give him to opportunity to accept or reject the same. अग्रीमेंट करते समय ऑफरी एक्टिव होना चाहिए, ऑफरी क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए कि जिस टाइम उसको लगे हाँ सही है तो सही या गलत है तो गलत। द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर may be made by express word, oral or written, or it may be implied by conduct. The communication of an offer may be made by express word, oral or written, or it may be implied by contract. कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ओरल भी होना चाहिए, रिटर्न भी होना चाहिए, हर तरीके से होना चाहिए। द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, जनरल और स्पेसिफिक भी हो सकता है। Where an offer is made to specific person, it is called specific offer, and it can be accepted only by that person. But when an offer is addressed to an uncertain body of an individual, the word at large, it is a general offer and can be accepted by any member of the general public by fulfill the conditions laid down in the offer. Lapse of offer. Lapse of offer. Lapse of offer का मतलब ऑफरिंग समाप्त हो जाना। Section 6 deal with various modes of lapse of an offer. It states that an offer lapse. It is not accepted with the specific time. It is not accepted within the specific time after a reasonable time if none is स्पेसिफाइड। कुछ समय चल रहा है, उस समय के अंदर मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऑफर चले जाएगा। इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, or if no mode is prescribed in some usual and reasonable manner by sending a letter by mail when early reply was requested.
This offer reject it by distinct refusal to accept it. Distinct refusal to accept it. ऑफर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इट either the offerer or the offeree die before acceptance. The acceptor failed to fulfill the condition precedent to an acceptance. अगर एक्सेप्टर फेल हो गया कंडीशन फुलफिल करने में तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा लैप्स हो जाएगा either the offerer and offeree die before the acceptance. ऑफरर और ऑफरी दोनों ही खत्म हो गए तो अग्रीमेंट होगा क्या नहीं ऑफरी रिजेक्ट एनी डिस्ट्रिक्ट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफरी ने रिजेक्ट कर दिया कुछ अग्रीमेंट एक्सेप्ट करने से पहले तो अग्रीमेंट होगा क्या नहीं the offeree make the offeree make a counter offer. The offeree makes a counter offer. It amount to rejection of the offer, and an offer by the offeree may be accepted or rejected by the offerer. Revocation of offer by the offerer. Revocation. The revocation of offer by the offerer. An offer may be revoked by the offerer at any time before acceptance. ऑफरर क्या कर सकता है उस अग्रीमेंट होने से पहले ही मना कर सकता है रिवोकेशन मतलब वापस लेना किसी चीज अग्रीमेंट को वापस लेना रिवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी रिवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी as it does not take effect until it is actual communicated to the offering. Before its actual communication, the offeree may accept the offer and create a binding contract. The revocation must reach the offeree before sent out the acceptance. An offer to keep open for specific time is not binding unless it is supported by consideration. Acceptance. क्या बोल रहा है वो acceptance. A contract emerge. A, a contract. A, a contract emerge from the acceptance of an offer. Acceptance is the act of assenting by the offeree to an offer. Under Section 2, Clause B of the Contract Act, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, become a promise. एक प्रपोजल है क्या है प्रपोजल
प्रपोजल को पर कोई पर्सन पर्सन क्या है उसको एक ऑफर देंगे, उसको क्या करेगा, ऑफर देगा। दूसरा पर्सन उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उस पर्सन वो पर्सन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और क्या हो जाएगा, पर्सन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। पर्सन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस, रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। रूल्स रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। किसको मुझे एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना है, उसके कुछ नियम्स है। एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस, एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस by word spoken, written or implied from the conduct of the party। एक्सेप्टेंस कुछ न कुछ होना चाहिए, एक्सेप्टेंस में कुछ न कुछ होना चाहिए। एक्सेप्टेंस में क्या होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए। कैसे रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। Acceptance may be expressed by word, spoken, written, or implied from the conduct of the party। एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक्सप्रेस कैसे करना चाहिए मुझे, कि वर्ड स्पोकन बोलकर, कैसा कर कर, बोलकर। रिटर्न मैं लिख कर दूंगा। इम्प्लाई फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। इफ पर्टिकुलर मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड, मेथड कैसी है, एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब। मेथड कैसी होनी चाहिए, लिख कर होनी चाहिए। द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेंस इन द प्रिस्क्राइब मैनर। Acceptance must be unqualified and absolute and must correspondence with all the terms of the offer. A counter offer or conditional acceptance operates as a rejection of the offer and causes it to lapse. Where house is offered rupees 100, 1000 and the offer counter offer rupees 990. The offer lapse by rejection, by rejection।
Acceptance must be communicated to the offerer. Communicate होना चाहिए offer और offeree के बीच में. For acceptance is complete the moment is it is to communicate, where the offeree mere intent to acceptance but does not communicate his intention to the offerer. There no contract. Mere, mere, the acceptance is not enough. Mental mental rejection is not enough. Mere silence on the part of the offeree does not amount to acceptance. Mere silence on the part of the offeree does not amount to the acceptance. Ordinarily, the offerer cannot frame his offer in such way as to make the silence or inaction of the offeree as an acceptance. In other words, the offerer can prescribe the mode of acceptance but not the mode of rejection. If the if the offer is one which is to be accepted by being acted upon, no communication of acceptance to the offerer is necessary unless communication is stipulated for the offer itself. Thus, if a reward is offered for finding a lost dog, thus if a reward एक पर्सन है जो ऑफर किया रिवॉर्ड किसके लिए जो उसका कुत्ता गुम हो गया है डॉग गुम हो गया है द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय फाइंडिंग द डॉग आफ्टर रीडिंग अबाउट द ऑफर एक पर्सन है जिसने वो रीड कर लिया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया and is unnecessary before beginning in search the dog is give notice acceptance to the offer. इसका मतलब क्या हो गया है कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है फॉर एग्जाम्पल है मुझे कहीं जाना है और मैं बस में वो मेरे को पता है वो बस जो है वो उस डेस्टिनेशन में पहुंचने वाली है जो डेस्टिनेशन मुझे चाहिए मैं जाके उस बस में बैठ गया तो मैं क्या क्या हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गया किसके अंदर आ गया उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेप्टेंस acceptance must be given within the reasonable time and before the offer lapse is revoked an offer become irrevocable by acceptance and acceptance never precedes an offer there can be no acceptance of an offer which is not communicated similarly performance of condition of an offer with the knowledge of the specific offer is no acceptance. Contract Contact over the telephone. Contract Contact over the telephone. Contract over the telephone are regarded the same in principle as those negotiated by the party in the actual presence of each other.
In both cases, offer is made and oral acceptance is expected. It is important that the acceptance must be audible, heard, and understood by the offerer. If during the conversation the telephone lines go dead and the offer does not hear the offeree word of acceptance, there is no contract at the moment. If the whole conversion is repeated and offerer hear and understand the word of acceptance, is contract is complete. Contact over the telephone. क्या बोला गया है अगर टेलीफोन पे ऑफर दिया जा रहा है एक्सेप्ट किया जा रहा है तो जो एक्सेप्ट करने वाला जो पर्सन है उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसको क्या होना चाहिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने को होना अगर उस पर्सन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है अगर उस पर्सन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उस वो ऑफर लीगल माना जाएगा एक्सेप्टेबल माना जाएगा अगर उस पर्सन को अगर उस पर्सन को इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलती ही नहीं अगर उस पर्सन को इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं मिलती तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल उस पर्सन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन intention to create legal relation. The second essential element of valid contract is that there must be an intention among the parties that agreement should be attached by legal consequence and create legal obligation. जो सेकंड इसेंशियल है एलिमेंट का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए लीगल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए और लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए लीगल कॉन्सिक्वेंस एंड लीगल obligations होनी चाहिए if there is no such intention part of the parties there is no contract between them agreement of social domestic nature do not complement legal relation as such not contract अग्रीमेंट सोशल नहीं होना चाहिए डोमेस्टिक नेचर का नहीं होना चाहिए एंड डू नॉट कम कंटेम्प्ट लीगल ये जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये लीगल रिलेशन में आएगा क्या लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या नहीं तो फिर ये इसमें एक्सेप्टेबल ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा अ प्रपोजल A proposal of an offering is made with a view to obtain the assent of the other party. A proposal, a, a proposal, a proposal of or an offer is made with view to obtain the assent of the other party, and when that other party expresses his willingness to act or abstain proposed, he accepts the offer and contract is made between the two. But both offer and acceptance must be made with intention of create legal relation between the parties. Where necessary, the court will look into the conduct of the parties, for much can be interfered from the conduct. The court is not concerned with the mental intention of the parties, rather than what a reasonable man would say was the intention of the party, having regard to all the circumstances of the case. Of the
case. For example, two persons agree to assist each other by rendering advice in the pursuit of virtue, the science, art. It cannot be regarded as a contract in commercial and business agreement. The presumption is usually the party intend to create legal relation, but the presumption is rehabitable, which means that show the party did not intend for legal bond. Consideration. Consideration. क्या बोल रहे हो? Consideration. Consideration is one of the essential element of valid contract. कंसिडरेशन क्या है? एक एलिमेंट है किसके लिए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए. The requirement of consideration stems from the policy of extending the arm of the law to the enforcement of mutual promise of party. A mere promise is not enforceable at law. For example, promise to make the gift of rupees 500 to B and a subsequent change his mind, B cannot succeed again. A. For breach of promise, B has not given anything in return. Consideration. मेन बात जो होती है कंसिडरेशन की जो होती है वो समथिंग इन रिटर्न होता है. कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब पैसों की जो बातचीत होती है, मनी मनी की जो बातचीत होती है वो कंसिडरेशन के अंदर आता है. मैं आपको ये दे रहा हूँ तो मुझे ये मिल कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिलनी चाहिए. अगर उसमें अमाउंट ही मेंशन नहीं है, अगर उसमें अमाउंट ही मेंशन नहीं है तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा. It is only when it is only when a promise is made for something in return from the promise, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा, that such promise can be enforced by law against the promiser. The something in return is a consideration for promising. For consideration in promising. जैसा मैं किसी पर्सन है, जैसा एक पर्सन उसको जमीन दे रहा है, तो जमीन के बदले में कुछ ना कुछ अमाउंट लेगा ना. सर फेडरिक पोलॉक हैज डिफाइंड कंसिडरेशन. उन्होंने डिफाइन किया कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं? एज एन एक्ट और forbearance of one party or promise there is the price for which the promise of the other is bought. ये इसमें कि एक पर्सन ऑफर देता है, दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है और उसके बदले उसको क्या देगा? दोनों कुछ देगा, पैसे देगा, मनी प्रोवाइड करेंगे. ये क्या करेंगे? उसके बदले उसको मनी प्रोवाइड करेंगे. It is something right, interest, profit, or benefit occurring to one party or some forbearance, determinant, loss, or responsibility give suffered undertaken by the other. Cure versus
Misa. Section 2D of the Indian Contract Act 1872. Section 2D. Section 2D of the Indian Contract Act 1872 defines consideration thus when at the desire of the promisor, the promisee or any other person done abstain from doing or does or abstain from doing a promise to do or to abstain from doing something such act or abstain or promise is called consideration for the promise. The fundamental principle is that consideration is essential in every contract is laid down by both the definition, but there are some important point of differences in respect of the nature and extent of consideration and party to it under the two system. Consideration the consideration at the desire of the promiser. प्रोमिसर बताएगा कि मुझे ये जमीन इतने में बेचनी है. Section 2D of the Act being with the statement that consideration must move at the desire or request of the promiser. This means that whatever desire of the third party, if a rushes to be helped whose house is on fire, there is no consideration but a voluntary act. But if goes to be helped at B request their good consideration as B did not wish to do act gratuitously. Consideration may move from the promisee or person. Any other person. Privity of contract. Privity. Privity of contract. Privity. Privity of contract. A stronger to a contract cannot sue both under the English and Indian law for want of privity of contract. The following illustration explain his point. और जो पर्सन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं वो क्या नहीं कर सकते, उस केस नहीं कर सकते. इन Dunlop Pneu- Pneumatic Tire Company was a Selfridge Limited, 1951 AC 847D. Supply tire to the wholesaler X on condition condition that any retailer to whom X resupply the tire should promise X not to sell to the public below DS list price. X supply the tire to the S upon this condition, but never the S sold the tire below the list price.
that there was contact between the D and X between X and X. Therefore, D could not obtain the damage from S, as D has not given any consideration for S promise to X nor party to the contact between X, D and X. Thus, a person who is not a party to the contract cannot sue upon even if through the contract is for his benefit. A who is indebted to B sell his property to C, and C, the purchaser of the property, promise to pay off the debt to B. In case C fail to B, B has no right to sue C. There is no privity of contract between B and C. Kind of consideration, the kind of consideration. Hmm, kind मतलब टाइप ऑफ कंसिडरेशन क्या बोला गया है वो टाइप्स ऑफ types of consideration. Consideration may be executory or future, which means debt make from promise to be performed in the future an agreement may someone. कुछ कुछ consideration, कुछ कुछ con, uh, executive future, which means debt make from promise to perform the future an engagement to be made someone. कुछ कुछ अग्रीमेंट क्या कर सकते हैं अपन फ्यूचर में भी कर सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है executed or present in which it is an act or forbearance made or suffer for a promise. In other words, the act constitute the consideration is wholly or completely performed. Consideration कैसा perform consideration consideration कैसा perform करना है wholly or completely. If A pay today rupees 100, if A pays today rupees 100 to the shopkeeper for goods which are promised to pay supply to the next day. If A pay today rupees 100 to a shopkeeper for goods which are promised to be supplied to the next day. ये पर्सन है जो अभी 100 रुपये पे कर रहा है जो कि कल वो मुझे गुड्स ला के देंगे. He has executed consideration but shopkeeper is give executory consideration. Executive consideration. A promise to executed the following day. उसने ए ने अपनी सर्विस जो भी पेमेंट है उसने तो कर दिया उसने अपनी तरफ से कंसिडरेशन कर दिया. The price is paid by buyer and goods are delivered by seller at the same time. Consideration executed by both the parties. Past, which means a past act of forbearance. That is to say, an act constituting consideration which took place and is complete before the promise is made. Rules governing consideration. Rules. Rules governing consideration. Rules. The rules governing consideration.
Every simple contract must be supported by valuable consideration, otherwise it is formally void, subject to some exception. हर एक कॉन्ट्रैक्ट को क्या लगता है कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा, void हो जाएगा. Consideration may be act of absence or promise. कंसिडरेशन को क्या लगता है absence and promise तो होना ही चाहिए कंसिडरेशन का. There must be mutuality. Each party must do or agree to do something, a gratuation promise, as in case of subscription for charity. Clarity is not enforceable. Consideration must be real and not vague. कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो रियल होने चाहिए, फेक वगैरह नहीं होना चाहिए, इंडेफिनाइट और इलिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए. Although consideration must have some value if need not adequate. कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, समथिंग कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए. A full return for the promise. Section 2 clause experience 2 clearly provide that an agreement to which the consent of the promiser is freely given is not void, merely become the consideration is inadequate. Consideration must be lawful. Consideration कैसा होना चाहिए, lawful होना चाहिए. It must not be some illegal act. It must not be some illegal act such as paying someone to the commit a crime. If the consideration is unlawful, agreement is void. कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, जो भी कंसिडरेशन है, जो भी इसका कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. Consideration Consideration must be something more than the promisee is already bound to the promiser. Thus, an engagement to perform an existing obligation made with the person to whom obligation is already owned and not made for consideration. When consideration not necessary, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं. General rule is that agreement made without consideration is void. जनरल रूल क्या बोलता है, जो भी कंसिडरेशन है, जो भी अग्रीमेंट है कंसिडरेशन के सिवा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा. पर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है certain exception है which make promise without consideration valid binding, thus agreement without consideration is valid. If it is expressed in writing and registered, made out of natural love, affection between parties standing in a fair relation to each other. If it is expressed in writing and registered and is made out of natural love, affection between the parties standing in near relation each other. It is made to compensate person
who has already done something voluntary for the promiser or done something which promiser was legally capable to do. कोई पर्सन है जो अपना प्रॉमिस उसने क्या क्या पूरा किया और समय के पहले कर दिया, तो उसको कुछ देना चाहता है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी को तो दे सकता है. Not a promise in writing and signed by the person to charge them urgent to pay the debt bear by the law of limitation. The requirements in the above exceptions are noteworthy. The first one requires written and registered promise. Second may be oral and written. Third must be writing. थर्ड मस्ट बी चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए. Flow. Flow in contract. Flow. The flow in contract. There may be circumstances under which a contract made under their rules may still be bad because there is a flaw. Vice and error some there as result of such flaw. The apparent agreement is not a real agreement. Where there is no real agreement, the law has three remedies. First, second, contract. Third, further, the agreement may be treated as of no effect, and it will then be known as void agreement. Secondly, the law may give the party aggressive the options of getting out of his bargain, and the contract is known as voidable. The party at fault may be compelled to pay the damages to the other party. Void agreement and voidable contract. कौन कौन से जो अग्रीमेंट है वो void है और voidable है. A void agreement is one which distinct of all legal effect. It cannot be enforced and confers no right, no either party. It is really not a contract at all. It is not existent. The technically word void contract are contraction, but the express provide a useful label for describing the situation that arises when a contract is claimed but in fact does not exist. For example, a minor's contract is void. उसमें क्या बोला है, माइनर के साथ जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा. माइनर के साथ माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा. According to section 2 sub section 2 clause I of the Indian Contract Act, a contract which cease to be enforceable by law become void when ceased to be enforceable. Void means lack of existence or nullity. According to section 2 of voidable contract, a contract act agreement which is enforceable by law at option of one or more of the party thereby
there, but not at the option of the other. Other is avoidable. Other is a voidable contract. Voidable contract is one which party can put to an end. He can exercise his option if his consent was not free. The contract will, however, are binding if he does not exercise his option to avoid it within a reasonable time. The consent of a party is not free, and so he is entitled to avoid the contract if he has given his consent due to misrepresentation, fraud, caution, undue influence. इलीगल अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट का मतलब होता है जो अग्रीमेंट लीगल नहीं है इलीगल है ये अग्रीमेंट करना सरकार ने मना किया हुआ है ऐसे अग्रीमेंट करना गलत है उसको इलीगल बोला जाता है जो लीगल नहीं है अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट इज वन विच लाइक द void agreement अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट कैसे void है मतलब समाप्त ये अग्रीमेंट को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता ऐसे अग्रीमेंट has no legal effect as between the immediate party for the transaction collateral to be also become trend with the legality and therefore not enforceable parties unlawful agreement cannot get any help from a court of the law. For no polluted hand shall touch the poor fountain of justice. On the other hand, a collateral transaction can be supported by a void agreement. For example, one party may have received the other party in some other way. There may be no genuine consent. The party may laboring under a mistake or one. Both the parties may be incapable of making a contract. Again, the agreement may be illegal or physically impossible. All these are called the flaw contract or the voices of contract. The chief flaw in contractor incapacity, mistake, misrepresentation, fraud. Flow in capacity, capacity and person. Flow in capacity, capacity and person. In law, person are either nature or artificial. In law, person are either natural or artificial. दो पर्सन होते हैं एक पर्सन होता है आर्टिफिशियल एक पर्सन है नेचुरल नेचुरल पर्सन आर ह्यूमन बीइंग एंड आर्टिफिशियल आर कॉर्पोरेशन ठीक है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी और इनकैपेसिटी इन एन इंडेसेंट ऑफ पर्सनैलिटी the general rule is that all natural persons have full capacity to make binding contract, but the Indian Contract Act 1872 admit an exception in this case of minor lunatic and person disqualified from contracting by any law which they are subject.
सभी नेचुरल पर्सन के साथ सभी के पास क्या कर सकते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लूनेटिक के साथ अ पर्सन disqualified है. The person are not compared to the contract. Section 11 of that provide that every person is compared to contract who is of the age of majority according to the law. अगर लॉ के अकॉर्डिंग उसकी एज ठीक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है. एंड हु इज साउंड माइंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड. साउंड माइंड का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ to which he is subject. Violate does. Both must have mutual mind, legal yardstick to maturity according to the law of conduct. His both should be measured and of sound mind, and if not, the law would presume that the maturity of the mind has not reached to the extent of visualizing the pros and cons of the act. Hence, a bar, a minor and lunatic competency to the contract. Lunatic agreement. Lunatics agreement. A person of unsound mind is a lunatic. जो पर्सन अनसाउंड माइंड है उसको क्या बोला जाता है लूनेटिक. उसका भी दिमाग नहीं चलता. That is to say, for purpose of making contract, a person is of unsound mind is at the time when make the contract he is incapable of understanding and of formation rational judgment as to effect upon interest. अगर पर्सन अग्रीमेंट के वक्त पागल हो जाता है या पागल है लूनेटिक है अनसाउंड माइंड है तो वो अग्रीमेंट कैसे माना जाएगा. वो जो अग्रीमेंट है वो जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट ही नहीं माना जाएगा. एक प्रॉपर अग्रीमेंट ही नहीं माना जाएगा. प्रॉपर अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा. फ्लो इन कंसेंट. फ्लो इन कंसेंट. बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट. द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट. अग्रीमेंट के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्या बोला रहे हो. अग्रीमेंट के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है. Mutual consent. In other words, the party should mean the something in the same sense and agree voluntary. It is when there is consent that the party are said to be consents ad adam. Their mind have met. Not only consent is required, but it must be free consent. Consent is not free when it has causes by caution, undue influence, mispresentation, fraud, or mistake. This element, if present, may betray the contract. Mutual willful mispresentation of fraud. Willful mispresentation or fraud. Willful misrepresentation or fraud.
willful misrepresentation, or fraud. As per Section 7 of the Indian Contract Act, fraud means an influence any of the following act committed by a party or to a contract with a convenience or by his agent with intent to devise another party there or his agent or to induce him to enter into the contract. The suggestion as a fact of the which is not true by one who does not believe it to be true. जो सजेशन दिया उसमें फैक्ट दिया उसमें क्या किया है ट्रू ही नहीं थे गलत है उसमें द एक्टिव कंसर्न fact by having knowledge belief of the fact a promise made without any intention of performing जो उसने प्रॉमिस दिया उसने क्या किया प्रॉमिस किया उसने परफॉर्म करेगा कि नहीं पता ही नहीं any other act fitted to deceive कैसा act to deceive any such act omission as a law specially declared to be fraudulent कुछ कुछ चीजें तो उसमें मेंशन ही नहीं की गई कुछ कुछ चीजें उसमें मेंशन ही नहीं है fraud is an untrue statement made no or without belief in the truth or risk recklessly carelessly whether true or false within the intent to deceive the chief integrant of a fraud or a false mispresentation assertion false मतलब गलत रिप्रेजेंट किया गया है a fact and not mere opinion fact को opinion not mere of opinion made with the intention that should be acted upon the representation must have actually included the other party to enter into the contract and so deceive him. The party deceived must there be indefinite, for there is no fraud without damage. The statement must have been made either with the knowledge that it has false or without belief in it truth or recklessly, without caring whether true or false. Contract umbrime fidi. There are contracts in which the law imposes a special duty to act with utmost good faith. कैसा किया गया कॉन्ट्रैक्ट कैसा है utmost good faith that is to disclose all material information failure to disclose such information will render the contract whatever at the option of the party भरोसे पर कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है जो भी हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है उसमें क्या होना चाहिए हर एक चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट उबरी में फीडीआर contract of insurance of all kind contract of insurance of all kind the insured must disclose all the insured material fact whatever state must be correct and truthful जो भी आप मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए इंश्योरेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस of all insure assurance must be disclosed the insurer all matter insurer all material fact and whatever the state must be correct and truthful company prospectus when a company invites the public to subscribe for its share, it is under statutory obligation to disclose truthful various matters set out in a company. Any person responsible for non-disclosure of any of the matter is liable to damage. Also, the contract to buy the share is voidable when there is
material false statement or non-disclosure in the such prospectus. जो भी कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तो उसको हर एक चीज दिखाना जरूरी। हर एक चीज कंपनी के प्रोस्पेक्टस में हर एक चीज और जो भी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है, जो भी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, मेंशन रहनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड, कोई कंपनी सेल ऑफ लैंड, कॉन्ट्रैक्टर है जो लैंड को सेल सेल करना चाहिए। वेंडर इज अंडर ड्यूटी द परचेस टू शो द गुड लीडर द लैंड हैज a contract to sell. Conduct a family arrangement. When the member of family make arrangement or arrangement for the settlement of family property, each member of the family must make full disclose every material fact with his knowledge. Caution. Clear? Caution. Caution is a definition in section 15 of the act. Caution कौन से सेक्शन में दिया गया है? 15 के अंदर। The committing threatening to commit any act forbidden by the Bharatiya न्याय संहिता 2003 or unlawful deterring or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of caution any person to enter into an agreement simply state the doing of any act forbidden by Bharatiya न्याय संहिता BNS is caution even though such an act is done place BNS is not in force of at if at the point of special hours B to execute promissory note in its favor to be successful. Life does not can avoid this agreement as its consent was not free. Under influence. Under Section 16 of the Indian Contract Act 1872, a contract is said to be produced under influence. Contract क्या कर रहा है? Under influence को produce कर रहा है. Where the relations sustain whatever party as such. Element of under influence क्या है? A dominant position. Position कैसी होनी चाहिए? Dominant होनी चाहिए. The use of obtain unfair advantage. यूज किया गया unfair advantage को यूज किया गया है वहाँ पे. The word unfair advantage उठाया गया है. The unfair advantage do not limit the jurisdiction to case where the transaction would be obviously unfair. जो भी कंपनी के ट्रांजेक्शन उसमें अनफेयरनेस हुई है बिटवीन द पर्सन डीलिंग इक्वल फुटिंग इन द वर्ड ऑफ लॉर्ड किंगस्टोन. The principle applied to every case where the influence is acquired and to abuse where the confidence is reposed or bettered. Legality of object.
Legality of object. Legality. The legality of object. One of the requisition of valid contract. Legality of object. ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लीगल होने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल हो जाए, इसलिए क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए? वन ऑफ द रिक्वेस्ट requisite of a valid contract is that the object should be lawful. हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए. सेक्शन 10. Section. The Section 10 of the Indian Contract Act 1872 provide all agreement or contract if they are made by free consent of party complained to the contract. Lawful consideration with a lawful object. Therefore, it followed that where the consideration or object for which an agreement is made unlawful is not a contract. जो भी ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए. अगर अनलॉफुल है ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा फिर तो. Section 23 of the Indian Contract Act 1872 provide that the consideration or object of an agreement is lawful unless forbidden by law. It is of such nature that is permitted. It would defend the provision of law, is fraudulent, involve, imply injury to the person, property of another. The court regard it as immoral or opposed to public policy. In each of these case, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which object or consideration is unlawful is void. Void and void and illegal contract. Void and illegal contract. A void contract is one which is destitute of legal effect. Along together, an illegal contract too has no legal effect as between the immediate party to the contract but has the further effect of testing the collateral contract also with illegality. For instance, a borrow from B. Rupees 1000 for lending to C, a minor. A contract between A and C is void, but B nevertheless recover the money from it. On the other hand, A borrow rupees 1000 from B to buy pistol to shoot C. The requisition whether B can recover the money hygiene and whether B has aware of the purpose for which money was borrowed. Consequence Consequence of illegal agreement. Consequence of illegal agreement. Illegal agreement. Illegal agreement is entire void. Illegal agreement जितने भी है वो क्या हो जाएंगे? Void हो जाएंगे. No action can be brought by a party to an illegal agreement. The maximum extirpe causes non order action. Enable causes no action arises. हम एक्शन भी नहीं उठा सकते. इलीगल अग्रीमेंट के ऊपर एक्शन भी नहीं उठाया जा सकता. मनी पेड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर अंडर एन इलीगल अग्रीमेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड. अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर या इलीगल अग्रीमेंट के तहत तो वो भी रिकवर नहीं की जा सकती. द मैक्सिमम इज ए पार्टी डेलिक्ट टू पॉलिट इंटरेस्ट condition defended in case of equal guilty more powerful in the conviction of the defendant.
where an agreement consists of two parts, one part legal and another is illegal. The legal part is separable from the illegal one. The court will enforceable the legal one if the illegal part cannot be separated. The whole agreement is illegal. जैसे दो पार्ट है एक जो जो अग्रीमेंट है जितना पार्ट जो है वो जो लीगल है उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं पर जो इलीगल पार्ट है उसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते. Agreement void as being opposed to public policy. Agreement void. Agreement agreement void as being opposed to public policy. ऐसा कोई अग्रीमेंट है जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है. ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है. ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे? रद्द हो जाएंगे. The head public policy cover a wide range of topics. The head the the head public policy cover wide range of topics. Agreement may offend agreement may offend public policy by tending to prejudice of the state in times of war, by tending to abuse justice, by trying to impose unreasonable inconventional restriction on the free of choice of individual in marriage or their liberty to exercise lawful trade or calling. The doctrine of public policy, the doctrine the doctrine of public policy is a branch of common law. डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या है? कौन सी ब्रांच है? कॉमन लॉ इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन लॉ. And like any other branch of common law, like any other branch of common law, it is governed by the president. President. The doctrine of public policy is not to be extended beyond the class already cover it, and no court can invent a new head of public policy. It has been said by the House of Lords that public policy is always on unsafe and treacherous ground for legal decision. It is possible for court involve a new head of policy. It should be done under extraordinary circumstances, give rise inconsistible harm to the society. ऐसे कोई भी एग्रीमेंट है जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जाते होंगे तो ऐसे एग्रीमेंट रद्द किए जाते हैं. अगर स्टेट के ही बीच में एग्रीमेंट चल रहा है तो फ्री चॉइस ऑफ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा. फ्री चॉइस ऑफ इंडिविजुअल मैरिज ऑफ देयर लिबर्टी टू एक्सरसाइज लॉफुल ट्रेड और कॉलिंग के बीच में. If it is possible for court
to the involve a new head of public policy could be seen involved होती है. It should be done under extraordinary circumstances, giving rises in contestable harm to the society. Following agreement are void as being against the public policy but they are not illegal. ऐसे कुछ अग्रीमेंट है नीचे दिए गए हैं वो रद्द हो जाएंगे पर इलीगल नहीं है. क्या नहीं है? इलीगल नहीं है. Agreement is restraint of parental right, an agreement by which party deprive himself of the custody of his child is void. अग्रीमेंट का क्या है? रिस्ट्रेन पेरेंट राइट है. Agreement by which party deprive himself of the custody of his child is void. Agreement is restraint of marriage. An agreement not to marry at all or not to marry any particular person or class of person is void in restraint of marriage. सरकार ने बोला है कि इस एरिया में लग शादी नहीं करना है तो क्या करेंगे तो क्या करना पड़ेगा उधर शादी नहीं करना पड़ेगा. अग्रीमेंट नॉट मैरी उस एरिया में अपने को शादी नहीं करना पड़ेगा. उस उस जगह अगर कोई वार चल रहा हो कुछ प्रॉब्लम्स हो और उस जगह के पर्सन के साथ अपन ने शादी की तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट. Marriage brokerage agreement. An agreement to procure a marriage for reward is void. An agreement and an agreement to procure marriage for reward is void. An agreement an agreement to procure marriage for reward is void. Where Purohit was promised rupees 200 in consideration of procuring a wife for the defendant. The promise was held void opposed to public policy and the Purohit could not recover the promised sum. An agreement to procure marriage for reward. मैरिज किसके लिए कर रहे हैं हम? रिवॉर्ड मिलना चाहिए हमको इसलिए कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? void हो जाएगा. पुरोहित was promised. पुरोहित ने क्या प्रॉमिस किया? 200 in consideration of procuring a wife for the defendant. The promise was held void as opposed to public policy and Purohit could not recover the promised sum. शादी होने के बाद क्या नहीं कर सकता? वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता. कौन? पुरोहित. Agreement. Agreement in restraint of personal freedom are void. Where a man agree with his money lender not to change his residence, not to change his residence or his employment, part with any of his property or to incur any obligation on credit without the consent of the money lender, it was held that he agreed was void. किसी के पर्सनल फ्रीडम को हम धोखा पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? void हो जाएगा.
Agreement in restraint of trade. An agreement and an agreement. An agreement and agreement is restraint of trade is one which seek to restrain a person from freely exercise a trade or profession. कोई भी पर्सन फ्रीली क्या कर सकता है ट्रेड कर सकता है बिजनेस कर सकता है वेजरिंग अग्रीमेंट अग्रीमेंट वेजरिंग अग्रीमेंट The literal meaning of the word wager is a bet. वेजर का क्या मतलब होता है बेट बेट लगाना wagering agreement are nothing but ordinary betting agreement wagering agreement are nothing wagering का नहीं agreement नहीं है पर ordinary का है betting agreement A and B A A and B enter into agreement that if England cricket team win the test match A will pay B rupees 100 and it lost B we pay rupees 100 to A. This is a wagering agreement and nothing can be recovered by winning party under the agreement. The essence of gaming and wagering is that one party to win and other lose upon future even at the time of the contract of an uncertain nature issue. If the event turn out one way, we lose, but turn out other way, will win. वेजरिंग अग्रीमेंट मतलब रहता है बेट होता है जो कि गेम में पैसा लगाना इसको क्या बोला जाता है एक वेजरिंग अग्रीमेंट बोला जाता है कि ये जीता तो मैं पैसा लूंगा तू हारा तो मैं तेरे को पैसा दूंगा इस तरह से वेजरिंग अग्रीमेंट होता है वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड वेजरिंग अग्रीमेंट कैसा है वॉइड है in India except Mumbai in India except Mumbai wagering agreement are void इंडिया में क्या है वेजिंग अग्रीमेंट वर्ड है किसको छोड़ के मुंबई को छोड़ के in Mumbai wagering agreement have been declared illegal by the avoiding wager wagering agreement have been declared illegal wagering agreement क्या बोल रहा है illegal डिक्लेयर किया गया है the avoiding wagers Amendment Act 1865. Therefore, in Mumbai, wagering agreement being illegal is void not only between immediate party but train and renders void all collateral agreement to it. Therefore, in Mumbai, wagering agreement being illegal, therefore Mumbai क्या बोला गया है wagering agreement कैसा है illegal है is not only between the immediate parties but trade and render void all collateral agreement to it. Thus, A bet with B and loss
apply to C for a loan. ए bet with B. ए ने क्या किया, बेट लगा दिया बी के साथ. ए ने क्या किया, बेट लगा दिया बी के साथ. अप्लाई टू सी फॉर लोन. अप्लाई, सी ने क्या किया, अप्लाई किया लोन के लिए. हु पे बी इन सेटल ऑफ ए लॉस. हु pays B settlement of A's loss. C cannot recover from A because his money paid under or in respect of wagering transaction which is illegal in Mumbai, but respect of India in such transaction being only void, C could recover from A, of course. A refused to pay B. ए ने मना कर दिया बी को पे करने के द अमाउंट ऑफ द बेट दैट हैज लॉस्ट, जो लॉस्ट हो गया है. बी कुड नॉट सू ए एनीवेयर अगेन वेयर द एजेंट behalf of his principal and loss pay over the money to the winner. He cannot recover the money from his principal if the transaction took place in Mumbai. Exclusive will recover. The agent win, he must pay the winning to the principal as the money was received on behalf of the principal. वेजरिंग अग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड है, इलीगल है, तो मुंबई को छोड़. गेमिंग अग्रीमेंट है ये. कौन सा अग्रीमेंट है? गेमिंग अग्रीमेंट. एक पर्सन पर दोनों जन पैसे लगाते, एक पर्सन हारता है, हारने वाला पैसा दूसरे को पैसे देता है. दूसरे को पैसा देता है. In a wagering contract, in a wagering contract, there must be mutually in the sense that gain of one party should be lost to other on happening on uncertain event which subject matter of the contract. Void agreement. क्या बोला है? Void. Void agreement. void agreement मतलब समाप्त, जो कि रद्द हो जाएंगे. The following type of agreement are void under the Indian Contract Act. Agreement by or with a minor, a person of unsound mind, or person disqualified to enter into contract. Section 11. ऐसा अग्रीमेंट जो माइनर के साथ किया गया हो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो अगर पर्सन को होश नहीं गया और अनसाउंड माइंड है. कैसा है? अनसाउंड माइंड है. पर्सन डिस्क्वालीफाई, और पर्सन डिस्क्वालीफाई कोई पर्सन है जो डिस्क्वालीफाइड हो गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने को, जिसमें कोई जेल में है, तो उस पर्सन के साथ आप ये नहीं कर सकते. टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 11. सेक्शन 11. जैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? रद्द हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे.
Agreement made under mistake of fact material to the agreement on part of the both parties सेक्शन 20। ऐसा कोई अग्रीमेंट है जिसमें फैक्ट ही नहीं लिखा है, मिस्टेक हो गई, फैक्ट जो फैक्ट लिखना था अग्रीमेंट के अंदर वो लिखा ही नहीं। मटेरियल टू द अग्रीमेंट ऑन पार्ट ऑफ द बोथ पार्टी सेक्शन 20 के अंदर वैसा अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। Agreement. A agreement of which consideration or object is unlawful. Section 23। ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, जैसा ड्रग्स वगैरह खरीद रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कैसा है, अनलॉफुल है, इसमें अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल if if any part of a single consideration for one or more object, सिंगल कंसिडरेशन है पर ऑब्जेक्ट कितने, एक और दो, दो एक और एक से ज्यादा, और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन सेवरल कंसिडरेशन फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, बहुत सारे कंसिडरेशन है पर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, इज अनलॉफुल द अग्रीमेंट इज वॉइड। ऐसा अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। Agreement made without consideration subject to the three exception provided तो सेक्शन 25। ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है तो ऐसा अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अग्रीमेंट इज रिस्टेन ऑफ मैरिज सेक्शन 26। रिस्टेन ऑफ मैरिज। अग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ ट्रेड सेक्शन 27। अग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ लीगल प्रेसिडिंग section 28। Agreement, the meaning of which not certain, capable of being made certain। अग्रीमेंट में जो भी लिखना था, जो भी मीनिंग था अग्रीमेंट का, वो सर्टेन ही नहीं है, जिसमें अच्छे से बताया गया ही नहीं है कि ये है और ऐसा ऐसा है, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, और ऐसा समय कैपेबल बता रहा है कि मैं सर्टेन, मेड कैसा है, सर्टेन बना हुआ है, ऐसा अग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा। अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजर अग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा। एन अग्रीमेंट टू एंटर इनटू अग्रीमेंट इन फ्यूचर, अभी अग्रीमेंट नहीं बनाना है, कब बनाना है, फ्यूचर में बनाना है, तो फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत है क्या, तो अभी क्यों बनाएंगे। एन अग्रीमेंट टू डू एक्ट इम्पॉसिबल इट्स इन इटसेल्फ सेक्शन 56 क्लॉज 1। ऐसे अग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है, कैसे है, इम्पॉसिबल, ऐसे एग्रीमेंट होंगे क्या, ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड। हमें हमने अभी क्या देखा उसमें, अग्रीमेंट देखा, अब क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज void ab initio सेक्शन 2 क्लॉज जी। अग्रीमेंट कैन एनफोर्स, ऐसा कोई अग्रीमेंट जो हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, ऐसा अग्रीमेंट जो हम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते,
इस agreement या contract क्या हो जाएगा? Word and obligation. A contract which ceases to enforce by law become void when it ceases to be enforceable. Section 2, Clause J. And contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable. Section 2, Clause J. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो सीज हो गया है जिसे हम कोर्ट में एनफोर्स ही नहीं कर सकते, हम लेके ही नहीं जा सकते, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? वॉइड. A contract become void when by reason for some event which promisor could not prevent, the performance of the contract become impossible by destruction of the subject matter of the contract after the formation of the contract. हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो ही नहीं कर पा रहा है दूसरा पर्सन. एक पर्सन है उसको जो उसको पॉसिबल ही नहीं है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, उसकी तबीयत खराब हो गई या वो डेथ हो गई, तो कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकता तो अपने आप ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. A contract become void by reason subsequent illegality. क्या है? Subsequent illegality. Illegal agreement. A in India agree to supply goods to B in Pakistan. After the formation of contract, war break out between India and Pakistan, and the supply of goods to Pakistan is prohibited by legislation. The contract become void. ऐसा कोई वार चल रही है अपने देश में और दूसरे के देश में के साथ, तो हम उस देश के साथ क्या किया? अग्रीमेंट किया कि हाँ भाई हम सामान जो है आपको सप्लाई करेंगे, गुड्स जो होते हैं अपने वो हम क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे. पर वॉर हो गई अग्रीमेंट के बाद, तो क्या करेंगे हम? वो जो है अग्रीमेंट वो वॉइड हो जाएगा. A contingent contract to do or not do anything if an uncertain future even happening, void if it even become impossible. Contingent contract ऐसे हो जाएंगे void, where a contract is voidable at the option of the aggrieved party. The contract become void when the option is exercised by him. Exercised by him. Contingent contract. Contingent. Contingent contract. As per section 31, as per section 31, a contingent contract is a contract to do or not to do something. To do or not to do something. If some event collateral to such contract does not happen. For example, a contract to sell B 10 bales of cotton for rupees 20,000 if the ship by which are coming return safely. This is a contingent contract. Contract of insurance and contract of indemnity and guarantee are popular instance of contingent contract.
कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर उधर से शिप प्रॉपरली आ गई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और शिप नहीं है तो कैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट होऊंगा? क्या नहीं होंगे? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हो भी सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कॉजी देखेंगे। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन सर्टेन इसेंशियल एलिमेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? इसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। जो भी अपने को मुद्दे है, हमारे हमारे जो भी मुद्दे है उसमें आने को होना, ठीक है। सच एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सच एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक ऑफर करने वाला और दूसरा एक्सेप्ट करने वाला। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, consideration and free consent. But sometimes a law implied promise impose obligation one party and confuse the right in favor of the other even there is no offer. No consequence and items. There is neither agreement nor promise. कोई agreement नहीं, कोई promise नहीं. Such cases are not contract in the strict sense, but the court recognizes them the relation resembling those of contract and enforce them as if they were contract, hence the term quasi contract. A quasi contract reset on the equitable principle that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly or at the expense of another. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है इक्विटेबल प्रिंसिपल पे चलता है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट किस पे चलता है? इक्विटेबल प्रिंसिपल पे। दैट पर्सन शॉल नॉट अलाउ, पर्सन को क्या ना क्या अलाउ नहीं करने वाला? हिमसेल्फ अनजस्टली द एक्सपेंस ऑफ अनदर। मतलब कोई ऐसा पर्सन कि दूसरों के पैसों पर राज करे, ऐसा नहीं चलेगा। इन ट्रुथ इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। दूसरे के पैसे खर्च करे। इन ट्रुथ इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। It is an obligation which the law creates in the absence of any agreement. When any person in the possession of other person money or equivalent under such circumstances that equity and good conscience he ought not to retain, and which justice and fairness belong to another in the duty and not an engagement, not an agreement. Intention which define. A very simple illustration is money paid under the mistake. Equity demand that such money must be paid back. डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिस्चार्ज हो गए हैं और टर्मिनेट हो गए हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिस्चार्ज हो चुके हैं, टर्मिनेट हो चुके हैं। A contract is said to be discharged or terminated when the right and obligation arise out of contract are extinguished. Contract may be discharged or terminated by any of the following mode. Performance of contract, performance of contract, mutual consent or agreement,
lapse of time, operation of law, impossibility of performance, breach of contract, discharge or terminate. अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है, टर्मिनेट करना है, तो ये मोड है जिससे मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता हूँ, टर्मिनेट कर सकता हूँ और डिस्चार्ज कर सकता हूँ। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करूँगा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। म्यूचुअल कंसेंट और अग्रीमेंट, म्यूचुअली कंसेंट कर सकते, बातचीत कर सकते। लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम लैप्स कम पड़ रहा है, टाइम के अंदर हमने अग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के तहत टर्मिनेट कर सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट को। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है करना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ देना। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन, डिस्चार्ज बाय impossibility. India doctrine or illustration primary look at the content in section 32 and 56 of the act. The court usually give the on the ground subsequently impossibility. ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसे पॉसिबल ही नहीं है करना, इम्पॉसिबल है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, तोड़ देना। मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐसे कोई ब्रीच है, ऐसा बता के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देना है, तोड़ देना है। कुछ केस लॉस दिए गए। रेमेडीज दी गई है, रेमेडीज देखेंगे। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टूट गया। द इंजर्ड पार्टी हैज सेवरल कोर्सेस ऑफ एक्शन ओपन टू हिम, जो भी इंजर्ड पार्टी है उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसे बताया गया। The appropriate remedy in any case will depend upon the subject matter of the contract and nature of the breach. Subject matter of the contract and nature of the breach. When a party contract has broken the contract, कोई पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, other party may treat the contract as rescinded, दूसरी पार्टी कहती है कि मुझे rescinded करना है, and absolved from all obligation under the contract. Under Section 65, when party treat the contract as rescinded, he make himself liable to restore any benefit has received under the contract his party from whom such benefit were received under Section 75 of the Indian Contract Act. Person rightfully resigned the contract is entitled to company for any damage which consists of recession of voidable contract. जो भी इंजर्ड पार्टी है, जो भी उसको नुकसान हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के कारण, तो क्या कर सकती है, कोर्ट में जाकर केस कर सकती है, उसमें क्लेम कर सकती है। वेयर द फ्लो कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टी, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजर्ड पार्टी में
Resign the contract and refuse further performance of the contract. रिसाइन कर सकती है और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज किया गया है, मना किया गया है, उसको रिसाइन करके उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकते हैं। सू फॉर डैमेजेस, जो भी उसका नुकसान हुआ है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के तहत उसको कर सकता है। सू फॉर एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द ब्रीच ऑफ निगेटिव टर्म, इंजंक्शन। सू फॉर एन इंजंक्शन to restrain the breach of negative term. So on quantum merit. So on quantum merit. Contract of indemnity and guarantee. Contract of indemnity and guarantee. Contract of indemnity and guarantee. A contract of indemnity is a contract by which one person promises to save the other party from loss causes him by the conduct of the promiser himself. A contract of indemnity is uh, a contract of indemnity. Contract as an indemnity is a contract by which one person, by one party, promise to save the other party from loss causes to him by conduct of the promiser himself. एक पर्सन है दूसरे पर्सन को बोलता है कि मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा आपके लॉस को। Contract of indemnity is a contract by which one promise to save the other party from loss causes him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. Section 124. A contract to indemnity be against the consequence of any proceeding which C take the against B in respect of certain sum of rupees 300 rupees. This is a contract of indemnity. The conduct of indemnity may be expressed or implied. The latter may be inferred from the circumstances of the particular case. Request of B. A incurred any expense, he can recover same from B. A contract indemnity be again the consequence of any proceeding which A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, which C may take again B, C के against में B के in respect of certain sum of rupees कितने रुपए की 300 रुपीज के लिए is a contract of indemnity. इसको क्या बोलेंगे हम, contract of indemnity. The contract of indemnity may be expressed or implied. कैसा है the contract of indemnity, the contract of indemnity कैसा है, express कर सकते हैं, implied हो सकता है. The latter may be inferred from the circumstances of the particular case and act done A at a request of B. A ने act किया B के request पे. A incurred any expense, he can recover the same from B. अगर ये कोई एक्सपेंस कर रहा है तो रिकवर कैसे करेंगे बी से. The person who promised indemnity make the good a loss is called indemnier, and person whose loss is made good is called indemnified or the indemnity holder. The person who promised to indemnify or make good the loss
जिस पर्सन को लॉस हुआ है, जिस पर्सन ने गुड्स बनाए थे, जिस पर्सन को लॉस हुआ है, इंडिफायर एंड पर्सन हुज लॉस इज मेड गुड इज कॉल्ड, सॉरी, द पर्सन हु promise to indemnify, प्रॉमिस जो पर्सन है जिसने प्रॉमिस किया है, मेक गुड द लॉस, जिसके एक पर्सन है जिसने प्रॉमिस किया है, क्या किया है, प्रॉमिस किया है टू इंडिमिफाई, मेक गुड लॉस इज कॉल्ड इंडिमिफाई, इसको क्या बोलेंगे, इंडिमिफाई। द law of agency, law, the law of agency. An agent is a person who employed to bring his principal into contractual relation with third parties। ऐसा एजेंट जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयड मतलब काम कर रहा है प्रिंसिपल के पास, टू द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन विथ थर्ड पार्टीज। ऐसा कोई पर्सन ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जो कि अपने जो बॉस है, उसका जो एक बॉस है उसके लिए वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एज द डेफिनेशन indicate, agent is a mere commercial link between the principal and third party, but during the period that agent is acting for his principal, but during the acting, जब वो एक्टिंग करता है, जो परफॉर्मेंस करता है, वो कैसा परफॉर्म करता है, प्रिंसिपल जैसे। he he is clothed with the capacity of his principal, of his principal। He is clothed with the capacity of his principal। A contract of agency may be express or implied। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैसा है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, नहीं तो इम्प्लाइड भी हो सकता है। सेक्शन 186 के तहत बताया गया, बट कंसिडरेशन इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन इसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एजेंसी में आल्सो अराइज बाय स्टॉपल नेसेसरी और रेटिफिकेशन। एक्सप्रेस एजेंसी, एक्सप्रेस एजेंसी, a contract of agency may be made orally और इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, नहीं तो राइटिंग में भी हो सकता है। The usual form of written contract of agency is a power of attorney।
The usual forms of written contract or agency is the power of attorney, which give him the authority to act on behalf of his principal accordance with the terms and condition there. मतलब प्रिंसिपल जैसा बताएंगा और जैसा बॉस बताएंगा वैसा अपन टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाएंगे उस अग्रीमेंट के अंदर. Therein agency create to transfer immovable property. In an agency trade to transfer immovable property. Immovable pro- the power of attorney, the power the power of attorney, the the power of attorney must be registered. A power of attorney may be general, giving several powers to the agent, or special, giving authority to the agent or transaction single act. Implied agency. Mana, yeah, agency. Implied agency may arise by conduct, situation of parties, or necessity uh, of the case. Agency by estoppel. Agency by estoppel. Section 237. Estoppel arise when you are precluded from denying the truth of anything which you have presented as a fact, although it is not a fact. Thus, where P allow third party to believe that A is acting as his authorized agent, he will be stopped from denying the agency if such third party relying on it make a contract with A even when A had no authority at all. Wife as an agent, where a husband and wife are living together. Husband and wife are living together. The wife is presumed to have her husband authority to pledge his credit for the purchase of necessity of life suitable to the standard of living. But the husband will not be liable if he show that he had he had expressly warned the tradesman not to supply goods and credit to his wife. He had necessarily forbidden the wife to pledge his credit. His wife has was already sufficient supply with the article in question. She was supplied with a sufficient allowances. वेब कैसी होती है एक एजेंट की तरह काम करती है any person held out of by another as his agent. The third party can hold that person liable for the act of the attestable agent or the agent by holding out. Partner are each other agent for making contract in the ordinary course of the partnership business. Agency of necessity. Agency of
necessity. Agency of necessity. Agency. The agency of necessity. इसकी हमको जरूरत है, नीड है, नेसेसिटी है. In certain circumstances, a person who has been entrusted with another property, entrust हुआ है, एक person है जो entrusted हुआ है किसके साथ, another property, may have incurred unauthorized expense, making an unauthorized expense to protect preserve. Such agency is called agency of necessity. For example, A sent a horse by railway and is arrived at the destination. There was no one to receive it. The railway company, being bound to take reasonable steps, keep the horse alive, was agent of necessity. See, a wife deserted by her husband and thus forced to live separate from him can pledge her husband create to buy all necessity of all of life according to the position of husband, even again his wishes. Agency by rectification. Agency by ratification. Agency by ratification. Where a person having no authority purport purport to act as an agent. Where a person having no authority purport to act as an agent. Duly appointed agent exceed his authority. Duly appointed exceed क्या कर सकते हैं, authority exceed कर सकते हैं. The principal is not bound by the contract. The principal is not bound by the contract supposedly based on his behalf, but the principal may ratify the agent transaction and so accept liability. In this way, an agency by rectification arises. This is also known as ex post facto agency. Agency arise after the event. Agency arise after the event. The effect of rectification is to render the contract binding on the principal as if the agent had been authorized beforehand. Also, rectification related back to the original making of the contract so that the agency is taken to have come into existence from moment the agent first acted, and not from the date the principal rectified. Rectification effect only if the following condition are satisfied. कुछ कंडीशन दी है जो सेटिस्फाई हो गई तो क्या बोला जाएगा, रेक्टिफिकेशन. The agent must expressly contact agent for principal who is existence and compete to the contract.
Principal must be combined to the contract not only at the time of agent acted, but also ratify agent act. प्रिंसिपल कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल किससे कंपेयर करता है कॉन्ट्रैक्ट से एक्ट किसका टाइम एजेंट का टाइम एक्टेड बट ऑल्सो व्हेन ही ratified the agent act ratified as the agent act. The principal at the time of ratification the principal at the time of ratification has full knowledge of the material full knowledge of the material fact and must ratify the whole contract with a reasonable time. Rati- Ratification cannot be made so as to subject to third party to damages or terminate any right or interest of the third person. Classes of agent special agent or general agent. Special agent. A special agent is one who is appointed to a specific act or perform specific function. He has no authority outside to his special task. The third party has no right to assume that the agent has unlimited authority and right. Assume that the agent has the third party has no right to assume that the agent has unlimited authority. Any act of the agent beyond authority will not bind the principal. स्पेशल एजेंट जो स्पेशल टास्क या स्पेशल काम के लिए अपॉइंट किया गया है उसको स्पेशल एजेंट बोले जाएंगे जनरल एजेंट जो कि जनरली अपॉइंट हुआ है जनरल एजेंट इज अपॉइंटेड डू एनीथिंग कुछ कोई भी काम करने के लिए विद इन द अथॉरिटी गिवन हिम टू द प्रिंसिपल इन ऑल ट्रांजैक्शन जैसे एक प्रिंसिपल रहेगा जो भी प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन देगा किसको एक जनरल एजेंट को ये काम करके दें तो वो जनरल एजेंट करके देंगे specific trader matters. Third party may assume to such agent has power to all user for general agent. Business involves the third party not affect any private restriction on agent of authority. Sub agent. A person who is appointed by the agent. uh, a person who is appointed by the agent and whom the principal work is delegate to known as a sub agent. Agent Section 191 provides that sub-agent is person employed by and acting under the control of original agent in the business of the agency. So the sub-agent is the agent of the original agent. मतलब एक एजेंट है क्या है एक एजेंट है उसने अपॉइंट किया एक एजेंट
उसने क्या किया, एक अपॉइंट किया एजेंट, उसको बोला जाएगा सब एजेंट। उसके अंडर रहेगा एजेंट, ओरिजिनल जो एजेंट रहता है उसके अंडर रहेगा सब एजेंट। As between themselves, the relation of sub-agent and original agent is that agent and principal, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन रहेगा एजेंट और सब एजेंट के। A sub-agent is only all the duty of original agent. The sub-agent is not directly responsible the principal, except found and willful wrong. Except willful wrong. The sub-agent is responsible to the original agent. Original agent is responsible to the principal for the act of the sub-agent. As regard the third person, the principal is represented by the sub-agent and is bound responsible for all act of sub-agent as if were an agent originally appointed by the principal. Mercantile agent. What's agent? Mercantile. Mercantile agent मतलब section 2 clause 9 of the Sales of Goods Act 1930. Section 2 clause 9 of the Sale of Goods Act 1930 define a mercantile agent is a mercantile agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods or consign goods for purchase or purpose of sale to or buy goods or raise money on the security of goods. Definition cover the factor broker, auctioneer, commission agent. गुड्स के रिलेटेड जो भी कामकाज होगा, सेल, परचेज है, सिक्योरिटी, जो भी काम होगा वो कौन करेगा, मर्केंटाइल एजेंट करेगा। गुड्स के रिलेटेड फैक्टर, a factor is a mercantile agent. Factors is a mercantile agent employed to sell goods, to sell goods which have been replaced in his possess or contract to buy goods of for his principal. He is a apparent owner of the goods. He is a custody. He can sell them in his own name and receive payment for goods. He has insurable interest in goods and also general lie in respect of any claim he may have arising out of any agency. फैक्टर क्या बोला है, फैक्टर इज मर्केंटाइल एजेंट। फैक्टर कौन है, मर्केंटाइल एजेंट टू सेल गुड्स। गुड्स को कौन सेल करेगा, मर्केंटाइल, which have been placed in his possession or contract to buy goods for his principal. He is appointed owner of the goods in his custody. मर्केंटाइल एजेंट को अपॉइंट करता है प्रिंसिपल और बॉस। ही कैन जस्ट सेल देम, मेरे जो गुड्स है बाबा उसको बेच के दे, एंड रिसीव द पेमेंट, एंड पेमेंट भी कलेक्ट करके दे। ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उसको क्या मिलता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मिलता है, उसको मिलता है इंटरेस्ट in goods, and also general law in respect of any claim he may have arising out of the agency. Broker. A broker is a mercantile agent. ब्रोकर कैसा है, मर्केंटाइल एजेंट है। मर्केंटाइल एजेंट कौन है, ब्रोकर भी हो सकता है। एजेंट हु ordinary course of business,
It may contract with other party for the sale and purchase of goods and security of which he is not interested with the for position for a commission called brokerage. He act the name of principal and he has no lie over the goods. He is not position of them. मर्केंटाइल एजेंट जो है वो ब्रोकर का भी काम करता है. सेल जो एक ब्रोकर का भी काम करता है, मतलब एक गुड्स है, उस गुड्स को क्या करेंगे, बेचेंगा एक पर्सन को. उसका जो कमीशन इसको मिलता है, उसको क्या मिलता है, इसका कमीशन मिलता है. वो गुड्स को जो सेल करेंगे उसका कुछ 10% या 20%, उसका जो भी कमीशन बनता होगा उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा. डील क्रेडर एजेंट. डील क्रेडर एजेंट. डील क्रेडर एजेंट. A deal creditor agent is a mercantile agent. Creditor agent का ही मतलब होता है mercantile agent who is in consideration of an extra remuneration guarantee to his principal that purchase who buy a credit will pay for the goods. Take them. In the event of third party failing to pay, the debt creditor agent is bound to pay his principal the sum owned by third party. इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन फॉर एक्स्ट्रा रेमुनरेशन गारंटी दी जाती है किसको, प्रिंसिपल को. दैट परचेज ऑफ हु बाय द क्रेडिट विल पे द गुड्स. दैट इज डेल क्रेडर एजेंट, मतलब उसने क्या किया, गुड्स जो होते हैं वो क्रेडिट पर बेच दिए. किस पे बेच दिए, क्रेडिट. इन द इवेंट ऑफ थर्ड पार्टी फेलिंग टू पे, पर जो पार्टी है उसने पेमेंट ही नहीं किया तो कौन लायबल होगा, ये एजेंट बाउंड होगा प्रिंसिपल को पैसे देने के लिए. ऑक्शनर. ऑक्शनर. An auctioneer is an agent who sell goods by auction. ऑक्शनर क्या करता है, बोली लगा के सेल बेचता है to the highest bidder in public competition. He has no authority to warrant his principal title to the goods. He is an agent for the seller, but after the goods have been knocked down, his agent for buyer is also purpose of evidence that his sale has taken place. Partner. In a partnership firm, every partner is an agent of the firm and is a co-partner for purpose of the business firm. Every partner is a partner. Partnership में क्या होता है, partners होते हैं and he of his co-partner for the purpose of the business firm. Banker. The relationship between banker and his customer is primary that of debtor and creditor. बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंक कैसे रिलेशन बनाती है कस्टमर के साथ, क्रेडिटर एंड डेटर. मतलब कस्टमर जो है पैसे डिपॉजिट भी करता है और लोन भी लेता है. इन एडिशन, a banker is an agent of his customer is buy and sell security. बैंक जो है सिक्योरिटी भी सेल करता है, लेता भी है. कलेक्ट चेक, चेक भी कलेक्ट करता है. डिविडेंड बिल्स जो होंगे, प्रोमिसरी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर, किसके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे. ही हैज
A general lien on all securities goods in his possession in respect of the general balance due to him by the customer. Duties of agent. Duties. The duties of agent. क्या क्या duties है देखो. An agent and an agent must act with the scope of the authority conferred upon him and carry out strictly instruction of the principal. A agent act within the scope of the authority conferred upon him and carry out strictly instruction of the principal. प्रिंसिपल ने मुझे जो बताया मैं उसके तहत ही काम करूंगा ऐसे एजेंट को करना पड़ेगा. In the absence in the absence of express instruction, he must follow the custom prevailing in the same kind of business at a place where the agent conduct the business. In the absence of express instruction, he must follow the custom prevailing in the same kind of business at the place where the agent conduct the business. He must do work with reasonable skill. कैसा skill? Reasonable skill and diligence where the nature of his position. The agent the agent purport to have special skill. He must exercise the skill and which expect from the member of the position. एजेंट को अपने स्किल के हिसाब से काम करने को होना है, ऐसा बोला गया. He must disclose promptly any material information coming to his knowledge which is likely to influence the principal in the making of the contract. अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मालूम हुई है तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है. He must not disclose the confidential information entrusted by him principal. कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज नहीं करना है. He must not allow to interest conflict with the duty. He must not compete with his principal. Agent must keep the true account, must be prepared reasonable notice, render an account. इंडर क्या होता है? ट्रू अकाउंट होता है. मतलब एजेंट को ट्रू एंड फेयर अकाउंट बनाने को होना. ऑन अकाउंट. He must not make any script profit. He must not allow to his interest to conflict. Hmm. He must not make any secret profit. He must disclose any extra profit that he may make. अगर कंपनी ने अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है तो बताना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि अपन रख लिए. डिस्क्लोज करना ज़रूरी है. सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रखना है. Where an agent is discovered taking secret bribe, the principal entitled dismiss the agent without notice. Where an agent is discovered taking secret bribes, the principal is entitled to dismiss the agent without notice. बिना नोटिस देके भी निकाल सकते हैं. रिकवर द अमाउंट ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट. एज प्रिंसिपल जो है वो सीक्रेट प्रॉफिट ले सकता है. रिफ्यूज टू पे द एजेंट रेमुनरेशन. जो भी एजेंट का रेमुनरेशन है जो पेमेंट है उसका वो रोक सकता है या मना कर सकता है अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो. He may repudiate the contract.
If the third party is involved in secret profit, is also recover damages. Also recover damages. Agent must not delegate authority to sub-agent. A sub-agent is a person employed by and acting under the control of the original agent in the business of agency. Section 191. This rule is based on the principle delegate non-posted delegate oblige cannot further delegated. Right of agent. Right. The right of agent. Where the service rendered by agent are not gratuitous or voluntary. Where the service rendered by the agent where the services rendered by the agent are not gratuitous or voluntary. The agent is entitled to the receive the agreed remuneration, or if none was agreed, a reasonable remuneration, the agent become entitled to receive remuneration. The agent become entitled to receive remuneration as soon as he has done what he had undertaken to do. Section 291. Sorry, 219. Certain classes of agent, factor who have goods and property of their principal in their possession, have a lien on the goods or property in respect of their remuneration and expense and liability incurred. He has a right to stop the goods in transit wherein an unpaid seller. एज एजेंट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल एज एजेंट रिप्रेजेंट कैसा करता है एजेंट अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करता है एज अ प्रिंसिपल the agent has a right to the the agent has a right to indefined by the principal against all charges expense and liability property incurred by him in the course of the agency section 222 to 223. The extent of the authority of agent depend upon the terms of expenses in his appointed. Extent of the authority and the extent of the authority agent depend upon the term expressed in his appointment. जब तक के लिए एजेंट को अपॉइंट किया गया है तब तक के लिए उसके पास तब तक वो काम करता है वहाँ पे अथॉरिटी इसके डिपेंड करती है उसके कब तक एजेंट कब तक काम करेगा और कब तक काम करेगा ये किस पे डिपेंड करता है अथॉरिटी पे कि उसको कब तक के लिए उसको अपॉइंट किया गया है और इट में इम्प्लाइड बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस और कोई केस लिया है उसने उस कंपनी का तो तब तक के लिए वो काम करेगा द कॉन्ट्रेक्चुअल अथॉरिटी द रियल अथॉरिटी द कॉन्ट्रेक्चुअल अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए रियल होनी चाहिए but implied authority do whatever is incidental to carry out the real authority. This this implied authority is also known as apparent or ostensive authority. Thus, the agent having an authority to do act has authority to do everything lawful which is necessary for the purpose are usually done in the course of conducting business.
Agent has authority, do all such things may be necessary to protect the principal from loss in the emergency. एजेंट को एक ऑथराइज्ड है कि नेसेसरी प्रोटेक्शन वो फॉलो कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है कि प्रिंसिपल या बॉस को नुकसान नहीं होना चाहिए, एंड विच he will to protect his own property under similar circumstances where the where butter was coming useless owing to delay in transit. He was therefore sold by the station master for the best price available, as it was not possible to obtain instruction from the principal, and the sale was held binding upon the principal. E-contract. कैसा contract? Electronic contract. Electronic contract are not paper-based, but rather in electronic form are born out of the need for the speed, convenience, and efficiently in electronic age. The whole transaction can be completed in a second with the both parties may simply affixing their digital signature to an electronic copy of the control contract. But now many countries have enacted law recognize electronic contract. Conventional law related to contract is not sufficient to address all the issues that arise in electronic contract. The Information Technology Act 2000 solves some of the particular issues that arise in the formation and authentication of electronic contract. ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब ई कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पटसरी हो जाता है। ई कॉन्ट्रैक्ट जो टाइम की जो होती है इसमें क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। वॉच